Hello and welcome viewers. It is 6 p.m. You are being joined by Pragya Bakshi Sharma. We are starting with the day's top stories today. From the national capital, 3 kids have died, 3 UPSC aspirants have died in the national capital owing to infrastructure collapse. If this is the state of affairs in the capital of the country, what about other cities? What about other states? The next story that we are bringing to you today is the infiltration nexus that Republic has unearthed. Republic Kannada investigation has exposed infiltration bid by Bangladeshis who are crossing the border, and the calls for a breakdown on the nexus has been rising from the BJP. More on that. Another story we are getting to you from Karnataka is the face-off, political face-off over the Valmiki scam. More on that after the headlines. Pan-India infiltration nexus exposed. Assam, Bengal, Jharkhand and now Karnataka and Uttar Pradesh register threat of illegal infiltration. Fake IDs, bribes used to sneak into India illegally. After reports of thousands of Rohingyas and Bangladeshis settle in Raebareli came to the fore, ATS investigation revealed that there was an ongoing conspiracy to grant Indian citizenship to the infiltrators. Illegal infiltration threat looms large in multiple states after Nishikant Dubey and Assam CM Himanta Biswa Sarma raised an alarm on demography change. Republic Kannada investigation exposes illegal infiltration in Bengaluru. The admission is on Republic cameras. Apathy, negligence and laxity takes lives of 3 students. Several lapses come to the fore. Documents show how Delhi Minister Saurabh Bharadwaj was sent a file last year regarding how there were interventions needed to control the flood situation in Delhi. That file, ladies and gentlemen, has been on his desk till date. Republic deep investigation into illegal basement of coaching centers in Old Rajendra Nagar explodes. Students reveal how they had sent an SOS call to authorities regarding waterlogging and how it was conveniently ignored. Viewers, are you 100% certain that your house help, that your vendor, that people in your surroundings are in fact the citizens of India? The threat of illegal infiltration has been looming on India since the formation of Pakistan. Political selectivism, appeasement politics and vote bank politics have allowed the ill that is illegal infiltration to bring about a demography shift in India. The issue has been raised time and again by the BJP but has been brushed off by parties like the Congress. 2 weeks ago, Assam CM Himanta Biswa Sarma made big claims of a massive demography shift in the state owing to infiltration from Bangladesh. Republic's month-long investigation to uncover the truth behind the illegal infiltration has silenced those political parties that rubbished claims of infiltration and illegal citizenship to infiltrators as communal politics. Here's a report. आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं।
मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। Amid the raging national demography change debate, Republic Kannada's deep investigation has exposed the illegal infiltration racket from Bangladesh. The crossover plan, the bribe, the route taken. Republic Kannada's month-long investigation blows the lid. Watch. आपका नाम क्या है? अलाम है, कहाँ से है? वो बांग्लादेशी के सर। बांग्लादेश। कब आया बैंगलोर? कितने महीने से यहाँ पर? वो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। कैसे आया वहाँ से? वो बॉर्डर का आया सर। वो बॉर्डर का वो कैसे बॉर्डर क्रॉस किया? वो 4-5 हज़ार दिया तो क्रॉस कर दिया। किसको? वो आदमी के मालूम नहीं सर। वो बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं आप लोग? कोई पासपोर्ट पे आता है, कोई ब्लैक में आता है। ब्लैक में कैसे? पैसा बीडीआर है ना, उसको पैसा देना पड़ेगा। किसको? बीडीआर को। बीडीआर नहीं? वो आर्मी बीडीआर देता है। हाँ। उसको कितना पैसा? कितना? वो गरीब आदमी हम लोग पेट के लिए आया इधर, 2-4 हज़ार रुपये देना देता हूँ, छोड़ देता है। The confession is on camera. How many Bangladeshi infiltrators have already entered India is a question nobody has an answer to. This is not all. 1,809 kilometers away in Uttar Pradesh's Raebareli, ATS investigation has brought to fore yet another racket. ATS is investigating a racket involving 20,000 fake residence certificates linked to Bangladeshi and Rohingya infiltrators. The ATS is calling it a conspiracy to grant Indian citizenship. Even the Assam Chief Minister has sounded an SOS over the changing demography. Do you see Assam becoming a Muslim majority state? And if so, by when? If we put the growth of Muslim on a statistical projection, then in next 20 years, after 2 census, I think Assam Muslim population will cross the 50% marks. So you are saying, this is viewers, please note this. Himanta Biswa Sarma is the sitting Chief Minister of Assam, and he is saying that by 2040, 2044... I am Arnab, I am quoting only the census figure. This is not something I have invented. This is what, when you put the census figure and the statistical projection, that will be the net result. The threat of illegal infiltration is a matter of national security, and the time of act against it is now. It is time for Pan-India NRC implementation. This is a very worrying trend, viewers. After reports of thousands of Rohingyas and Bangladeshi settlers in Raebareli came to the fore, the ATS investigation has revealed that there was an ongoing conspiracy to grant Indian citizenship to infiltrators. Here's what we know so far. An illegal birth certificate racket has come to the fore in Uttar Pradesh's Raebareli. The police has filed an FIR against the village development officer and 3 others for allegedly issuing counterfeit birth certificates on a large scale. ATS investigation in the case has exposed the links of about 20,000 fake residence certificates allegedly linked to Bangladeshi and Rohingya infiltrators. Police have registered an FIR against 4 people and have arrested 3 more in the case. थाना सलून में एडीओ पंचायत की तहरीर पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 318, 319, 338, 337, 340 भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। Even as the investigation is underway,
Congress has now tried to pin the blame on the state administration. उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह उन्होंने कहा है जिस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब देखने को मिल रहा है, आज़ाद भारत में कभी देखने नहीं मिला। तो ये प्रमाण उस चीज़ का है जिस तरह से ऑनलाइन करप्शन हो रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, फर्जी लोगों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की असफलता है और सरकार की असफलता दर्शाती है कि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कोई नागरिक हो सकता है या कोई नागरिकता से हट सकता है। A manhunt is currently underway to nab the mastermind who orchestrated this fraud. Just 2 days ago, 3 IAS aspirants lost their lives in a flooded basement of a coaching center in West Delhi's Rajinder Nagar. The national capital is now seething amid the massive outrage. Republic's cameras have gone above and beyond to bring you the grim reality of the national capital. Turns out what we have known so far is just the tip of the iceberg. While 13 coaching centers are under the radar, the number of illegal centers are spread across the national capital. We get you an exclusive report from the capital. It has been 2 days since the 3 IAS aspirants tragically lost their lives. Massive outrage has spilled onto the streets. 13 coaching institutes have been shut. But the truth is much uglier. Republic brings you the ground reality. More than 500 small and big libraries are illegally operating in basements of residential localities. And that's not all. Most of the libraries operating flout the rules and do not follow safety norms, which is just one entry and one exit door. नमस्ते। ये क्या मतलब कोई लाइब्रेरी है क्या? हाँ? नहीं है। Only students with biometric access are allowed inside. These libraries charge lower than market rates in a bid to lure UPSC aspirants. Despite the grave lapses, MCT continues to turn a blind eye. प्रॉब्लम भी है, ये एरिया ओवर क्राउडेड हो चुका है, अपनी कैपेसिटी के ऊपर रन कर रहा है ये एरिया। मतलब दिस एरिया इज़ टोटली ब्लीडिंग। मतलब अगर यहाँ की कैपेसिटी 1 लाख है तो 1.5 लाख बच्चे रह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बट हाँ अगर एक फ्लैट का स्ट्रेंथ 5-4 लोगों का है तो उसमें 5 लोग 6 लोग को किसी तरह एडजस्ट किया जा रहा है। Republic's explosive report has brought forth disturbing details. While the nation demands justice for the 3 lives lost, the fight is on to prevent any such killing in the future. The state of law and order in West Bengal seems to be crumbling after a video of a high-ranking TMC official assaulting a woman went viral. This incident comes on the heels of previous controversies surrounding political violence in the state. Listen in. Sexual abuse in Sandesh Khali. Woman dragged and stripped in Cooch Behar. Couple flogged in Uttar Dinajpur. And now, a high-ranking TMC official assaulting a woman. Violence mars West Bengal. And not a word from CM Mamata Banerjee. In a disturbing video that has gone viral, TMC General Secretary Gopal Tiwari is seen violently assaulting a woman. Tiwari allegedly encroached on a neighbor's land, and when the neighbor protested, Tiwari and his associates reportedly unleashed a brutal attack. আমাদের কি নিরাপত্তা থাকলো? কাল এত কিছু হওয়ার পরে ভিডিও ফুটেজ দিলাম, বেকসুর খালাসটা কিভাবে উনি পেয়ে গেল? প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদের টাকা পয়সা আছে তাদের কি কোনো অন্যায় নেই? তারা কি কোনোদিন কোনো অন্যায় করে না? এখন তো ভয় হচ্ছে যখন তখন আমার ফ্যামিলিতে বাড়িতে এসে আমার ফ্যামিলিকে মারধর করবে।
যখন তখন আমাদেরকে মার্ডার করে দেবে। কালকে যেভাবে আমাদেরকে হুমকি দিয়েছে, এরপরে তো এত কিছুর পরে তো এখন বাড়িতে আসতেই পারে, এসে তো এখন আমাদেরকে যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে। Even as he was arrested after the video went viral, Tiwari was quickly released on bail. BJP has now launched a scathing attack. যারা কালীঘাটের জমি দখল করছে তিনি যদি পুলিশ মন্ত্রী হন তার লোকেরা তো তাই করবে। কালীঘাটের 38টা জমির প্লট দখল করেছে ব্যানার্জি পরিবার। হরিশ চ্যাটার্জি এবং হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে কোনো লোক নেই, মানে কাউকে রাখতে দেয়নি। एक और वीडियो सामने आया है। कालना तृणमूल कांग्रेस के टाउन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गोपाल तिवारी का ये वीडियो है, जिसमें वो बेरहमी से एक महिला को पीट रहे हैं। आज माँ माटी मानुष बचा नहीं है। ममता दीदी कभी शाहजहां शेख को जो संदेश खाली करता है उसका बचाव करती है, कभी ताजमुल जैसे लोगों को तृणमूल कांग्रेस के नेता और विधायक बचाते हैं। महुआ मोइत्रा जैसी जो नेत्री है, जो महिलाओं के विषय में इतनी अभद्र बातें करती है, उनका भी बचाव किया जाता है। आज केवल बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ, ये बन चुका है तृणमूल कांग्रेस का पूरा उद्देश्य। The law and order situation in Mamata's Bengal is ever plummeting. And as the state boils over issues of women's safety, the question remains, will Gopal Tiwari face any action, or will Mamata turn a blind eye on the back-to-back incidents in her own state?